say this is the perfect time for applying for a work permit if you are want to come to Poland. तब ये छोटे मोटे जॉब करने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप 5-10 लाख रुपए अपने एजेंट को दे दो या किसी को भी दे दो और फिर वेस्ट हो जाए वो टू लाइक मिडल ईस्ट और सम अदर लाइक कंट्रीज लाइक इंग्लिश कंट्री, बस इसके लिए भी आपको इंग्लिश सीखनी होगी. तो मतलब ऐसा है ना कि इंडियंस का मैं ये देखता हूँ, ऐसा मेंटेलिटी है कि इंग्लिश भी नहीं सीखेंगे. Guys, welcome back to my channel. My name is Utkarsh. I live in Poland and I make vlogs. So in case if you're watching my face for very first time, so I would love if you subscribe to my channel. I mean थोड़ा भाई को support करिए और subscribe वगैरह करिए. Basically in this video we're gonna talk about everything regarding Poland work permit. I mean I was getting a lot of messages on my Instagram that bro please make a video about work permit. चलिए शुरू करते हैं. यार थोड़ा technical गुरुजी की तरह नहीं हो गया. First of all, I would like to clarify what is work permit. So basically work permit is a piece of document which allows you to work legally in Poland if you are a foreigner. And also you don't need work permit if you are a student. If you are a student here in Poland and if you are a graduate of a Polish university, so in that case you don't need any specific work permit to work legally in Poland. If you ask me, if you take my suggestion, I always say the best way to come to Poland and to start working is come as a student, finish your university and then get into some job. अगर आप देखें मतलब यार पुलिस कहाँ बैठो तभी सारा डिस्टर्बेंस आ जाता है. Compare the stats, I can say that the student visa has a higher chances of getting the acceptance in comparison to the work permit visa. So I hope that makes sense. For work permit, if you are coming as a like non-white collar job, like how to say blue collar job, so in that case sometimes it gets really hard to get the work permit because here in Poland they have a lot of immigrants from Belarus, Ukraine and all this like East European countries. तो वो भाई इनकी population यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो like labor job वगैरह in the warehouses and all these places, they are the one who are occupying all the space. Personally, if you ask me, if you are getting an opportunity here in Poland for like a non-white collar job, like a meat factory or like in a warehouse employer, I think in that case you should just reconsider things because here with that minimum wage, I wouldn't say like you can raise a family or you can save enough money to send back to India. Because I know if you are leaving your country, if you are coming like traveling all the way from India to Europe to Poland, so you would like you are just coming for a better life, right? And to earn like more money. I can definitely assure you that with the minimum wage salary, coming to work in the warehouses or in the like factories won't give you enough cash because the conditions are not really very good, and they also give the like the minimum wage, and sometimes they even give the like illegal wage. I mean that wage is not even illegal what they have mentioned in the contract. So in that case you should think again, and that is one of the main reasons they get their work visa rejected. I mean so many people they get their work visa rejected because they have the work contract from some very small company, and also in the contract the wages are far too less, and also the working hours are a lot, and also there are so many different things which plays roles to get a successfully work visa. I mean there are a lot of factors which plays very vital role so that you can get your work visa successfully. So here in this video I'm gonna like discuss everything in very detail, so just stay tuned. I mean coffee वगैरह लेके चाय वगैरह लेके बैठ जाइए. If you are coming to Poland as a software engineer or in some like business field, and if you work for some big MNCs like big IT companies, there are like so many international companies here in Poland. So in that case the company will provide you all the documents, and in that case you have sure shot visa. Like आपका visa लग ही जाएगा if you are coming for a professional job. But in case if you are coming for I don't know like a very minimum wage job or working in a warehouse or I don't know some other places, so I can say that as a Asian, like as an Indian, it will be very hard for you to get the visa because in the past few years like there have been a lot of people who are coming from these countries and they have kind of like misused the visa. They don't go back, and I mean there are a lot of different things which I won't like to talk about in this video. तो मैंने जो बताना था बता दिया. I know after listening to this a lot of you guys must be like demotivated, but that's not my like motivation for this video. That's not my purpose. I'm just here to share the ground reality, the truth, because I'm living in Poland from already like almost 3 years now. I mean 3 साल होने वाला है. तो मैंने जो देखा अभी तक मैं यही बताने वाला हूँ कि ये छोटे जॉब्स के लिए दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बेलारूस, यूक्रेन, आई डोंट नो द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अगर किसी वेयर हाउस है ये सब जॉब में आओगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा. मतलब वीज़ा लग जाता है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें दे पुट इनटू कंसिडरेशन. लाइक आपका वीज़ा इंटरव्यू कैसा था, आपकी कंपनी की कैसा वर्क परमिट है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका जो वर्क परमिट का ड्यूरेशन कितना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट. सो लेट मी जस्ट मेक दिस क्लियर. आई मीन बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है. यू पर्सनली कैन नॉट अप्लाई for work permit. Like a company which is giving you a job
your employer which is hiring you, they have to apply for work permit on your basis, and the work permit is applied in the regional, the the voivodeship, like the office is like, how to say, the regional municipal office, like the governor's office. तो वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई करना होता है योर एम्प्लॉयर को. आप खुद से आके या पोलैंड में आप टूरिस्ट वीजा वगैरह पे आके यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वर्क परमिट. इन फ्यू ईयर्स बिफोर देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कुड कम ऑन टूरिस्ट वीजा एंड देन अप्लाई फॉर वर्क परमिट, बट अभी वैसा कुछ सीन नहीं है. यू कैन नॉट कम ऑन टूरिस्ट वीजा एंड देन अप्लाई फॉर वर्क परमिट इन पोलैंड एंड देन लिव लीगली इन पोलैंड. सो आई वुडंट सजेस्ट यू टू डू ऑल दिस. आई मीन इलीगल काम मत करो. द थिंग इज वंस यू गेट डिपोर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द शेंगन कंट्रीज इन द यूरोप, सो इट विल बी लाइक वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अनदर वीजा फॉर एनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज आपका उसमें इनके यूरोपियन डाटा सिस्टम में यू विल बी ब्लैक लिस्टेड. मतलब मैं तो ये बोलूँगा ये सब काम मत करो. मतलब लीगली आओ, लीगल बेसिस पे आओ, नहीं तो इंडिया में रहो या फिर जस्ट लुक फॉर सम अदर कंट्रीज या लाइक कनाडा और सम इंग्लिश कंट्री. बट आई मीन इंग्लिश वगैरह सीखिए, बट आई वुडंट सजेस्ट यू टू डू एनी इलीगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लाइक दैट्स नॉट माय मोटिवेशन, ब्रो. आई एम नॉट विद ऑल दिस. So now let's talk about what are the important things which should be mentioned in your like Polish work permit. So first of all, obviously it should have your employer's name, company address, KRS number, like the gross salary in 1 month, like how much you gonna earn, and also your working hours, and also about the accommodation, like is accommodation covered or not, and also the validity of the work permit, like for how much time your contract is valid, like the validity of the contract. Also the most important thing is the job description, like your description of the job, like what position you are coming for in the work permit, it should be mentioned. Example, if you are coming to work in a warehouse here in Poland, so it should be mentioned that what, like you are a forklifter, like the driver, or you are like a helper in like general helper, or like what is the job position. And also it's very important to just check that your work permit is legit, because recently I've getting a tons of message on my Instagram and the people they keep sending me their work permit. मतलब भाई to be honest मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है that I go through each and all of the documents or whatever you are like talking about regarding the work permit, because a lot of people they keep telling me like stories कि they had like fake work permit, फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. तो भाई वो सब चक्करे मत पड़ो. मैं तो यही बोलूँगा, just go through some legit agency. Also I would like to talk about is very important, just be aware of fake agencies who are giving like fake work permit, because recently there have been a lot of scams. There are a lot of people who keep messaging me on Instagram that bro my work permit visa got rejected because I had like fake work permit, like can you check my work permit, is it like fake or legit. As far as I know in India there have been a lot of scams. मतलब एजेंसीज वगैरह दे आर चार्जिंग लाइक 5-6 लाख इंडियन रुपीज़, लाइक 5,000 यूरोज, 10,000 यूरोज. मतलब यार इतना पागल मत बनो. डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस फेक एजेंसीज. लाइक आई डोंट नो, इट्स नॉट इवन वर्थ इट. लाइक पर्सनली मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप 4-5 लाख रुपए आप किसी एजेंट या किसी को भी दे के पोलैंड आना चाह रहे हो, इससे अच्छा आपकी इंडिया में बिजनेस वगैरह ओपन कर लो. कुछ यहाँ से अच्छा ही होगा, मतलब कुछ डिसेंट ही कमाओगे. डोंट बी लाइक क्रेजी मूविंग टू यूरोप और लाइक फैसिनेटिंग लाइफ वगैरह जो भी है. आई एम रियली सॉरी दैट आई एम यूजिंग सम लाइक हार्श वर्ड्स इन दिस वीडियो, बट कुछ लोग तो भाई इतने पागल हो जाते हैं कि एजेंट को 5-10 लाख रुपए दे के भी लाइक दे वांट टू कम टू पोलैंड एज एंड वर्क इन लाइक आई डोंट नो वेयर हाउस और सम स्मॉल जॉब. तो भाई इतने पागल मत बनो. उस 5-10 लाख रुपए आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, कुछ बिजनेस वगैरह ओपन करो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप यहाँ से ज़्यादा ही कमाओगे और ज़्यादा ही अच्छा रहेगा वो. तब ये छोटे मोटे जॉब करने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप 5-10 लाख रुपए अपने एजेंट को दे दो या किसी को भी दे दो और फिर वेस्ट हो जाए वो. मतलब यार मेरे को समझ नहीं आता लोगों को क्या ऐसा लाइक फैसिनेशन है. मतलब आप ठीक है एजेंट को पागलों की तरह आप जो भी मांग रहा है एजेंट आप उसको दे रहे हो पैसे, और फिर बाद में आप बैठ के रोगे कि आपका फेक एजेंट था या जो भी फेक हो गया काम. गो फॉर लाइक दोस काइंड ऑफ वर्क. आई डोंट नो, लाइक गो टू लाइक मिडल ईस्ट और सम अदर लाइक कंट्रीज, लाइक इंग्लिश कंट्री. बस इसके लिए भी आपको इंग्लिश सीखनी होगी. तो मतलब ऐसा है ना कि इंडियंस का मैं ये देखता हूँ ऐसा मेंटालिटी है कि इंग्लिश भी नहीं सीखेंगे और फिर बाद में रोएंगे कि ये हो गया साथ में वो हो गया. मतलब यार अगर आपको मिनिमम वेज ही जॉब करनी है तो मैं बोलूँगा गो टू सम इंग्लिश कंट्री, लाइक गो टू कनाडा. आई डोंट नो, लाइक there are so many English countries, right? So just go to some English country, because वहाँ पे जो मिनिमम वेज भी काम करोगे आप तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, and then you can save enough so that you can send to India. कोई चाहते हैं like English और IELTS से and they still want to like move abroad. So भाई मेरे को तो समझ नहीं आता. I don't get the sense of the people who think that way. I'm really sorry if I'm using some harsh words in this video, but recently I'm getting a lot of DMs और वो कितने लोगों के साथ ऐसा स्कैम वगैरह हो गया है कि एजेंट 5-10 लाख रुपए लेके मतलब गायब हो गया, ऐसा हो गया. तो यार वो सब देख के पता नहीं यार दिमाग का भोसड़ा हो जाता है मेरा. ठीक है, तो पता है किसी के साथ ऐसे स्कैम हो जाता है, फिर यार पता नहीं मेरे को लोग बताते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनके लिए लाइक दुख होता है. आई फील सिंपैथेटिक फॉर देम, बट स्टिल आई फील हेल्पलेस, राइट. तो इसीलिए मैं फर्स्ट प्लेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा अभी क्या सिचुएशन चल रही है इन 2021, एंड स्पेशली इन 2021 एज यू कैन सी दे हैव बीन लाइक ग्लोबल पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो राइट नाउ आई वुडंट से दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट. इफ यू आर
want to come to Poland. But still, the best way is to apply for like a student visa. Like if you can get into some university, if you are like not really that old, आपके education में अगर थोड़ा मोड़ा gap भी है तो भी चलता है. You can apply for a student visa, and I think there's a sure shot. Student visa is comparatively much easier than getting like a work permit visa. But still, if you want to come to Poland through some agency, so I would just say do your own research. And it's not that all the agencies in the market are fake. There are some legit, like some good ones. This is how it works. Those agencies, they have some tie-up with some like warehouses or companies for like minimum wage small jobs. The moment you sign the contract with that particular agency, they will get the work permit from that particular company. The company will hire you. So after you get the work permit from that agency, you can go to your nearest like the Polish embassy in your country, in your city, and then you can apply for the visa, like the work permit visa. So basically this is how it works. But still मैं ये बोल रहा हूँ कि बीच में कितना सारा scam भी हो जाता है, तो आप just be aware of that. I don't know if somebody has told you this, but if a company is hiring you for the work permit, so they have to show to the Polish government that why they are hiring a foreigner instead of like a local person. So इसीलिए मतलब work permit का थोड़ा मतलब वो होता है that the company has to prove to the government कि वो एक foreigner को क्यों hire कर रहा है उस जगह के लिए instead of a local Polish people. I mean, that's a different thing, that the Polish people, they don't really want to work here for the minimum wage. They can easily move to, because of the European passport, they can easily move to like UK, Germany or some other country. वही gap fill करने के लिए they have a lot of people from Belarus, Ukraine who are coming to Poland, because I mean Belarus and Ukraine, they still have like worse economy than Poland for sure. I mean, I'm not here to offend anybody, but that's like the fact. Get the successfully visa for the work permit, you can come to Poland, you can fly down to Poland, and then here, if you have the work permit longer than like 1 year, because in the beginning you'll only get the work permit visa for 1 year. So after the 1 year you can apply for the TRC, but only you can apply for the TRC if you have the contract, like the work contract, like the work permit for more than 1 year. I mean, if it's less than 1 year, then you cannot apply for the TRC, and then you cannot stay legally in Poland. I think that's pretty much for this video. I've shared what I wanted to say about the work permit and what I know about the work permit, like how you can apply and what are the good and bad of the work permit for Poland. So I really hope that after watching this video, now you have an overall idea. Now you should give it a thought. It's up to you. I'm not telling you that do not apply. I'm not telling you to like come to Poland or do not come to Poland. I mean, my motivation for making these videos is just to help you guys in like whatever way. Like also guys, if you ask me that should I apply for work permit visa in 2021 during this time of the pandemic, so I would just say like no. Guys, if you ask me that should I apply for the work permit visa in 2021 right now in the time of the pandemic, so I would say no. थोड़ा रुक जाओ, just wait for a moment, because right now I've seen a lot of Polish people also, they have kind of lost their job, because right now I'm also working in the McDonald's as like, you know, part-time job. So there I've met a lot of people who has lost their job, and that's the reason they are working in the like McDonald's. तो मैं ये बोलूँगा अभी थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा इशू है. आई मीन इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप देख लो किसी भी कंट्री में अभी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जॉब के लिए. सो आई वुड जस्ट से लाइक जस्ट वेट फॉर अ बिट, एंड मे बी लाइक इन 5 months 6 months, maybe after 1 year the situation will get better, and then you'll have more chances to get the visa for the work permit. So again, I'm saying this through this video, my motivation was not to like demotivate anybody. I'm not saying don't come to Poland or don't come to or come to Poland. My only motivation was to tell you the truth. My only motivation was to like show you some facts, some reality, like what's going on in Poland, because I live here, you know, like you are back in India, और मुझे पता है कि आप इंडिया से या कहीं भी आप दूर बैठे रहोगे तो आपको ये नहीं होता है वो बाहर का वो लाइफ और वो बहुत लाइक फैसिनेटिंग वगैरह लगता है. बट व्हेन यू एक्चुअली कम हियर, व्हेन यू एक्चुअली कम टू द प्लेस, यू सी द रियलिटी लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ. तो बस यही बोलना था. अब यार किसी को बुरा भी लगा होगा तो मैं सॉरी बोलता हूँ दिल से. मतलब मैं अभी थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ. मेरे को ऐसा सीन है कि इतने मैसेजेस वगैरह आते हैं इंस्टाग्राम पे, और फिर लोग जब बताते हैं ना कि उनके 5 लाख रुपए चले गए, 10 लाख चले गए, लाइक एजेंट फेक निकला या वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो यार मुझे भी दुख होता है. मतलब आई कैन फील योर पेन, because I'm not from I can say that I'm not from very rich family, और पैसे बस ऐसे बह रहे हैं, ऐसा नहीं है. मतलब स्ट्रगल मैंने भी देखा है, और मैं भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ पोलैंड में आगे. आई एम अ स्टूडेंट, और मैं पढ़ाई भी करता हूँ और साथ साथ जॉब भी करता हूँ. तो मैं दोनों चीज़ें देखता हूँ. लाइक स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है, बट स्टिल अगर मैं तो ये बोलूँगा इफ़ यू वांट समथिंग सो बैड इट विल हैपन. अब आप देख लो. That's pretty much for this video. I really hope you got something out of this video, and this video help you in one way or another. If it did, just make sure you give it a thumbs up and consider subscribing to my channel for more such videos. और अगर वीडियो बुरा लगा होगा तो भाई फिर सॉरी बोलता हूँ, और फिर आप डिसलाइक भी मार सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप देख लेना. एंड आई एम गोना सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन लव फ्रॉम पोलैंड, पीस. और हाँ, बस इतना ही बोलना था. बाय.